Welcome students and welcome. Today we have lecture 7 again of respiratory disorders. Firstly we will discuss about bronchitis and emphysema. Today we are going to learn about pneumonia and asthma. Pneumonia is an lungs of infection and it is caused by organism or bacteria that is called Streptococcus pneumoniae. If in this infection both lungs are affected, then this is called double pneumonia. The most common cause of pneumonia is a bacteria which is known as Streptococcus pneumoniae, and some other viral infections and fungal infections may also lead to cause of pneumonia. When causative organism, that is Streptococcus pneumoniae, enter the alveoli, it will settle over there and increase in its number and it will destroy the alveoli. Alveoli को destroy कर देगा. When alveoli is destroyed, then as I told you, alveoli is the structural functional unit of lungs, and here a gases exchange take place. When there is no alveoli, so there will be no gases exchange and blood will contain more carbon dioxide and less oxygen. So blood will become the poor oxygenated blood, and this bacteria also causes of production fluid and pus. Lungs में fluid और pus भी produce करेगा. There are many symptoms of pneumonia in like high fever, shivering and cough, and the patient's skin also change, that it becomes dusky or purplish. But there is treatment for pneumonia. Vaccines and antibiotics are available, so we can use different vaccines to prevent the pneumonia, and antibiotics are also used by doctors for the treatment of this type of pneumonia. So asthma is the form of allergy. asthma जो है एक एलर्जी की फॉर्म है in which inflammation of bronchi take place. more mucus inflammation, ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है. दिस इज़ नॉर्मल ब्रोंकाई. ये नॉर्मल ब्रोंकाई है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है. दिस इज़ द अफेक्टेड और दिस इज़ इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई. ये इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई है और इसमें ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गया, श्रिंक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता. सो वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट अटैक ऑन ब्रोंकाई. इसमें जो है डायरेक्ट अटैक होगा ब्रोंकाई में, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाएगी. डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस हैं. एलर्जेंस मीन्स एलर्जी कोज मटीरियल्स अटैक ऑन ब्रोंकाई एंड इट विल डिस्ट्रॉय द ब्रोंकाई. So in asthma patient, the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens. Allergens means different allergy causing materials like dust, smoke, perfumes and pollens. When any person or any patient exposed to such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive responsive constriction. तो ये जो ब्रोंकाई है ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करता है और एकदम ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है लाइक दिस. ये उस एलर्जेंस को बर्दाश्त नहीं, टॉलरेट नहीं कर पाता और ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. The condition in this condition the patient affect difficulty in breathing में बड़ा difficult हो जाता है. and asthma also have many symptoms and these symptoms vary from differ करती हैं from person to person. the major symptoms are shortness of breath, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है. wheezing mean breathing जो है वो whistling के साथ like sound produce होता है during breathing. cough and chest tightness, केमिकल्स विद एबिलिटी एंड डिफरेंट किस्म के इन्हेलर यूज़ किए जाते हैं एज़मा में इलाज के लिए, एंड डिफरेंट किस्म के इन्हेलर यूज़ किए जाते हैं ताकि ब्रोंकाई को डाइल्यूट कर सके और एज़मा को कंट्रोल किया जा सके. सो दिस इज़ योर लेक्चर. यू लर्न pneumonia and asthma. till the next lecture, Allah Hafiz.